So, hello everyone. So, here we will discuss the inductor current and the inductor voltage waveforms. Basically, how the inductor current and the voltage will vary when we have provided this pulse input to this series RL network here. So, as we can see, this pulse input is provided, just which is 10 volt, just for the 2 seconds, right? So, for this time instant, from 0 to 2 seconds, this circuit is a source RL network, right? And after 2 seconds, now the circuit will become source free RL network, right? Which is a discharging RL network. अब यहाँ पर it is given initially कि inductor is having 0 ampere current, right? So initially the inductor is discharged. So because of the source which is present for the 2 seconds, so for 2 seconds the inductor will charge, right? According to the transient equation. So IL of t will be equals to the transient equation for the inductor current, that is the IL infinite plus IL 0 plus minus of IL infinite and exponential raised to power minus of t upon tau. This is the times valid for the time instant t greater than equal to 0. Right. So this is nothing but equal to IL 0 plus, which is 0 ampere. So this will be simply IL infinite and 1 minus e raised to power minus of t upon tau. So according to this charging equation, the inductor current will increase, right? अब यहाँ पर at t tending to infinity, right? At t tending to infinite, which is the present steady state, this is the present steady state, and inductor will be short circuited at the steady state. So circuit will be अब whenever अब यहाँ पर see this input is available for just 2 seconds, right? But when we calculate the inductor current at the steady state is IL infinite, तो we assume करते हैं, we basically assume कि ये जो 10 वोल्ट है वो बेसिकली अवेलेबल है अप टू t टेंडिंग टू इनफाइनाइट टाइम तक, राइट? तो ये 10 वोल्ट अवेलेबल है इस इनफाइनाइट टाइम तक, इस तरह से वी अज्यूम. तो यहाँ पर सिंपली वी विल प्रोवाइड दिस 10 वोल्ट, और जब इंडक्टर इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट में सिंपली शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो सिंपली इट विल बी शॉर्ट सर्किट, राइट? And the current flowing across this inductor is nothing but the IL infinite with a short circuit which is simply 10 amperes, right? So इसी तरह से we proceed. अब ये भले ही 2 सेकंड के लिए अवेलेबल है इनपुट, 2 मिली सेकंड के लिए भी होता तभी भी ऐसे ही प्रोसीड करते कि 10 वोल्ट को बेसिकली अज्यूम करते कि वो इनफाइनाइट टाइम तक ये वोल्ट मतलब ये सोर्स प्रेजेंट है इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है? सो दिस इज द 10 एम्पीयर. अब यहाँ पर टाइम कांस्टेंट, सो फॉर RL network the time constant is L by RTh. यहाँ पर because there is a single resistor, right? So simply it will be L by R, and time constant is always calculated for the circuit for the time instant t greater than 0. So यहाँ पर इस तरह से जैसे टाइम constant लिखते हैं, this is the 1 ohm, and इंडक्टर के अक्रॉस यहाँ से बेसिकली वी सीधा RTh, और by whenever we do RTh so we remove the input, right? So यहाँ पर input को इस तरह से we remove, यहाँ से we see the RTh, so RTh is simply 1 ohm here, and L is 1 Henry, so time constant is 1 second. So if you know all these concepts, so you can fast forward this video, right? So the current equation IL of t is 10 and 1 minus e raised to power minus of t and upon tau is 1, right? इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग द इंडक्टर करंट इज इंक्रीजिंग, विच इज सिंपली इस तरह से. अब यहाँ पर बट द इनपुट इज अप्लाइड ओनली फॉर द 2 सेकेंड. सो 2 सेकेंड तक ये इंडक्टर कितना चार्ज होगा तो बेसिकली अपन इस इक्वेशन से निकाल लेंगे. तो IL of t at t is equals to 2 will be 10 1 minus e raised to power minus of 2, and ये वैल्यू when we will calculate, so ये बेसिकली 8.65 एम्पेयर्स आ रहा है, राइट? सो यहाँ 2 सेकेंड तक इतना ये चार्ज होगा, राइट? तो लेट्स ड्रॉ दिस वेवफॉर्म. इंडक्टर करंट IL of t, और यहाँ पर it has charged up to this value, that is
8.65 amperes. तो यहाँ तक it has charged to this time instant, it is 2 seconds, right? So यहाँ तक तो basically because the circuit source R and input पर, तो इसलिए it was charged. अब इसके बाद because यहाँ we have removed the supply, तो यहाँ इसके बाद ये सर्किट डिस्चार्जिंग बन जाएगी, राइट? so, यहाँ पर ये सर्किट जो है वो सिंपली डिस्चार्जिंग नेटवर्क बन जाएगा. ठीक है. अब so after 2 seconds, so what is the circuit for t greater than 2 seconds? Circuit will be simply this input is removed, so simply short circuiting the input, और यहाँ पर this is the resistor 1 ohm and this is the inductor, right? ये basically circuit बचा है इतना डिस्चार्जिंग नेटवर्क फॉर t greater than 2 सेकंड के लिए. बट यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि जो करंट का इक्वेशन है वो क्या, मतलब आई शुड राइट लाइक दिस कि आई एल ऑफ टी मतलब आफ्टर टी ग्रेटर देन 2 सेकेंड्स विल बी सिंपली, मतलब जो यहाँ तक ये चार्ज हुआ इस वैल्यू तक, राइट? इसके बाद इस तरह से डिस्चार्ज कर जाएगा, राइट? तो क्या इस तरह से लिखना सही है कि 8.65 एंड e रेज़ टू पावर माइनस ऑफ टी अपॉन टाइम कांस्टेंट इज 1 सेकंड, राइट? टाइम कांस्टेंट कभी भी 1 सेकंड है तो टी अपॉन 1. सो इज इट करेक्ट? या आप इस तरह से लिख सकते हैं कि 40 ग्रेटर देन 2 सेकंड आई एल टी इज इक्वल्स टू जो भी यहाँ तक 2 सेकंड तक जितना ये वैल्यू तक चार्ज हुआ था उसके बाद ही सिंपली एक्सपोनेंशियली डिस्चार्ज हो जाएगा. तो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट? क्यों रॉन्ग है अब ये? बिकॉज ये सर्किट जो है वो टी ग्रेटर देन 2 सेकंड के बाद का सर्किट है. तो अब यहाँ पर भी ट्रांजिएंट इक्वेशन वी हैव टू राइट कि आई एल ऑफ टी विल बी आई एल इनफाइनाइट प्लस आई एल ऑफ, अब बिकॉज ये जो सर्किट वी हैव ड्रॉन ये इट इज नॉट आफ्टर टी ग्रेटर देन 0 सेकंड, राइट? ये पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के बाद का ड्रॉन सर्किट है, तो ये बेसिकली फाइनाइट स्विचिंग होती है. सो दिस इज यहाँ पर 0 प्लस ना होकर अब यहाँ पर प्लस हो, बिकॉज ये ट्रांजिएंट इक्वेशन ही वैलिड टी ग्रेटर देन सेकंड के बाद है. जैसे यहाँ पर जो इक्वेशन इनिशियली वी हैव रिटन ये बेसिकली टी ग्रेटर देन 0 सेकंड के बाद ही वैलिड थी, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर 0 प्लस. सो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है बिकॉज दिस सर्किट वी हैव ड्रॉन आफ्टर टी ग्रेटर देन 2 सेकंड बिकॉज स्विचिंग पोजीशन, मतलब बेसिकली सर्किट का जो कंडीशन है वो चेंज हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2 प्लस आएगा एंड माइनस ऑफ आई एल इनफाइनाइट. एंड यहाँ पर भी अब एक्सपोनेंशियल रीज टू पावर माइनस ऑफ t minus of 2 divided by time constant. This will be the transient equation after t greater than 2 seconds. Because जो standard transient equation होता है, जो मैं पहले भी my videos I have discussed this, जो standard transient equation होता है वो basically ये होता है IL of t is IL infinite plus or IL of t naught plus. अब ये कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट हो सकता है, एल टी नॉट प्लस माइनस ऑफ आई एल इनफाइनाइट एंड एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर माइनस ऑफ टी नॉट डिवाइड बाय टाइम कांस्टेंट. सो दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर द टाइम इंस्टेंट टी ग्रेटर देन टी नॉट, राइट? So when this t naught time instant is 0, if this t naught is 0, then we write like this: IL of t is equals to IL infinite plus IL 0 plus minus of IL infinite and this exponential raised to power minus of t divided by time constant. Because ये ज़्यादातर देखने को मिलता है इसलिए यही इक्वेशन वी रिमेंबर, राइट? तो बट यहाँ पर बिकॉज 2 सेकेंड के बाद सर्किट का कंडीशन इज चेंज, सो इसलिए यहाँ पर दिस विल बी द ट्रांजिएंट इक्वेशन. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि यहाँ पर देखिए ये जो टर्म है ये काफी इफेक्ट डालेगा ना यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर ये टर्म को सिंपली वी वर राइटिंग लाइक दिस e raised to power minus of t upon 2, जो एब्सोल्युटली रॉन्ग, राइट? तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट अगेन, सो आई एल ऑफ टी विल बी इनफाइनाइट. आई एल इनफाइनाइट हो तो 0 ही है बिकॉज अब तो सर्किट डिस्चार्जिंग है, 2 सेकंड के बाद जो सर्किट है वो तो सिंपली एक डिस्चार्जिंग नेटवर्क है, तो आई एल तो 0 एम्पियर है. तो सिंपली जो आई एल 2 प्लस है and e raised to power minus of t minus of 2 divided by time constant which is 1. And just a second, यहाँ पर this 2 is because inductor holds the current, so IL at 2 seconds that we have calculated here, IL at 2 seconds, this one 8.65
amperes. So at 2 seconds, whose inductor holds the current, so it will be simply equals to IL of 2 plus 8, which is 8.65 amperes. So यहाँ पर it will be 8.5 and e raised to power minus of t minus of 1 divided by 1. So this will be the equation after 2 seconds. Right. Up again we draw this waveform, final waveform for the inductor current. So initially it is charging and it has charged up to a value which is 8.68 amperes. Right, up to this time instant, that is 2 seconds. And after that, it is exponentially decreasing like this, which is following the equation. Here it is following the equation 8.65 e raised to power minus of t minus of 2 divided by 1, and here it is following the equation that is 10 1 minus e raised to power minus of t. Right. So this is the waveform for the इंडक्टर करंट. अब यहाँ पर अगर किसी भी टाइम इंस्टेंट पे टी ग्रेटर देन 2 सेकंड के बाद किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर पूछा जाता तो बेसिकली वी विल सिंपली सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ऑफ दैट टाइम इंस्टेंट इन दिस एक्सप्रेशन, राइट. सो यहाँ पर दिस इज द इंडक्टर करंट वेवफॉर्म. अब लेट्स डिस्कस अबाउट द इंडक्टर वोल्टेज. अब इंडक्टर के वोल्टेज का डिस्कशन करेंगे वीएल ऑफ. ठीक है, तो यहाँ पर वीएल ऑफ टी. अब टू मेथड हो सकते हैं वीएल ऑफ इंडक्टर के वोल्टेज के डिस्कशन के लिए. जैसे फर्स्ट मेथड इफ आई डिस्कस द फर्स्ट मेथड कि वीएलटी वी नो दैट कि एल डिएबिलिटी, राइट, सिंपल. तो अब बिकॉज इंडक्टर का जो करंट इक्वेशन है वो भी डिफरेंट है फॉर 0 to 2 सेकंड टू आफ्टर देन 2 सेकंड. सो व्हेन वी फर्स्ट ऑफ ऑल discuss for 0 to 2 seconds. So for this, the inductor current IL of t is 10 1 minus e raised to power minus of t. So simply इसको डेरिवेट कर लेंगे. So VL of t will be N, which is 1 Henry, right, and d by dt of this 10 1 minus e raised to power minus t. But it will be this 10 will be constant and it will be e raised to power minus t, right. Simple e raised to power minus of t. So ये basically inductor is following this voltage equation. So just 10 e raised to power minus of t for the time instant t greater than for less than 2 seconds, right. अब यहाँ पर जैसे इंडक्टर इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर 10 वोल्ट से बेसिकली इज डिक्रीजिंग. तो t is equals to 2 seconds, what will be the voltage? Simply it will be 10 raised to power minus of 2. So ये बेसिकली वैल्यू e raised to power minus of 2 6.135. तो यहाँ पर ये वैल्यू जाएगा दिस 1.35 वोल्ट, राइट. तो इस इतने वोल्टेज तक इंडक्टर वोल्टेज हैज डिक्रीज्ड फ्रॉम दिस 10 वोल्ट, राइट. इनिशियली ये 10 वोल्ट था और यहाँ पर ये इस वोल्ट तक डिक्रीज हो गया. बट अब अपन जानते हैं, बट वी नो दैट कि इंडक्टर का जो वोल्टेज है वो कभी होल्ड नहीं होता, राइट. तो VL इंडक्टर वोल्टेज एट t is equals to 2 seconds, ये will never be equal to VL at t is equals to 2 second plus, right. तो यहाँ पर 2 सेकंड तक तो ये इंडक्टर वोल्टेज का यहाँ पर इतना वोल्ट इसने एक्वायर कर लिया. उसके बाद 2 सेकंड पर ऑब्वियसली एक डिसकंटिन्यूटी आएगी, राइट, बिकॉज ये वो दो वोल्टेजेस कभी भी इक्वल नहीं होते. तो यही बेसिकली इंडिकेशन है कि इस मतलब जैसे इफ आई ड्रॉ दिस वेवफॉर्म जस्ट सेफली एंड ड्रॉ यहाँ पर जस्ट लुक एंड ड्राइंग कि जैसे यहाँ पर इनिशियली इट वाज 10 वोल्ट, तो ये इस तरह से कुछ डिस्चार्ज हुआ, राइट. यहाँ 10 वोल्ट से इस वोल्टेज तक यहाँ तक इट हैज गॉन टू दिस इज द 1.35 वोल्ट. अब यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस हो गई, यहाँ पर ये डिसकंटिन्यू आएगी, और वो भी बिकॉज यहाँ पर आफ्टर 2 सेकंड के बाद वी नो दैट कि यहाँ पर ये जो इंडक्टर करंट है वो एक डिस्चार्जिंग फंक्शन बन चुका है, बिकॉज सीरीज जो नेटवर्क है वो डिस्चार्जिंग नेटवर्क है, राइट. और जब भी इंडक्टर डिस्चार्जिंग में होता है तो इंडक्टर का वोल्टेज जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है. वी नो दैट बिकॉज
इंडक्टर का जो वोल्टेज है एल डी बाई डी टी है, एंड इंडक्टर का करंट बिकॉज एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डेरिवेटिव एक डिक्रीजिंग फंक्शन का हमेशा नेगेटिव होता है, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो यहाँ पर मतलब ये कुछ वैल्यू है ना, वो इस तरह से आएगा, यहाँ पर नीचे कुछ वैल्यू आएगा यहाँ पर। तो यही बेसिकली दिस इज द डिस्कंटिन्यूटी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अब वो जो डिस्कंटिन्यूटी है उसका मतलब वो वैल्यू वी विल see the circuit after the t greater than 2 seconds. So for t greater than 2, inductor current equation is 8.65 and e raised to power minus of t minus of 2, right? So basically this equation को we will derive according to this relation, that is the VLT is equals to L derivative L that is given out of this 8.65 and e raised to power minus of t minus of 2. So simply it will be 8.65 and minus, right, this minus and e raised to power minus of t minus of 2, सिंपल। तो यही बेसिकली वो वैल्यू है जो हम यहाँ पे वो रीच कराए। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये, उसके बाद फिर वी एन इनफाइनाइट, तो वी ऑल नो दैट कि वो तो जीरो एम्पीयर ही होता है, जीरो वोल्ट ही होता है, राइट। सो जो फाइनल वेवफॉर्म है इंडक्टर पे वोल्टेज का वो इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पर was 10 volt, 10 volt से it has discharged this value that is 1.35 volts। और उसके बाद यहाँ पर दिस इज द डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पर इस तरह से वेवफॉर्म डिसकंटिन्यूस हुआ, वो भी -8.65 तक। दिस वैल्यू इज -8.65 माइनस ऑफ 8.65 वोल्ट, और उसके बाद इट विल फाइनली टर्मिनेट 0 वोल्ट, राइट। इस तरह से it will terminate to 0 volt because this is fixed value as we have already discussed, and this is the discontinuity. This is identical. This that is following this equation tan e raised to power minus of t, and this part is following -8.65 of t minus of 2. So this is the first method also have discussed. Now second method. Second method is more interesting because second method is the transient method. अब यहाँ पर we will write the transient equation for the inductor voltage. So VLT is equals to VL infinite plus of VL 0 plus minus of VL infinite and exponential raised to power minus of t upon tau, right? This is the transient equation for the inductor voltage. अब यहाँ पर VL infinite is fixed value, we know that is VL infinite is always 0 volt because inductor is short circuited at the steady state, right? So VLT will be simply VL 0 plus and e raised to power minus of t, right? Or time constant is 1 second. So now VL 0 plus, we will make the circuit at t is equal to 0 plus. So t is equal to 0 plus, inductor will be replaced by its initial current source, right? Initial current source. So circuit will be simply how about this is the 1 ohm and initial current was 0 ampere, and this input is available which is 10 volt. This is the voltage and the 0 plus, which will be simply 10 volts, right? जो भी मतलब हमने देखा ही था उस इस वेवफॉर्म में, right? This is the 10 volt. So यहाँ तक तो ठीक है, EVL 2 is equals to 10 e raised to power minus of t. अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही we will calculate t is equal to 2 second, that will be 10 e raised to power minus of 1.35 volt, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक है, which is not equals to VL at t is equals to 2 plus, right? तो अब यहाँ पर the concept comes कि for t greater than 2 seconds, again the finite switching transient equation, so VLT will be VL 2 plus and e raised to power minus of t minus of 2 divided by this time constant. This equation is valid for the time instant t greater than 2 seconds. Now we will make the circuit.
at t is equals to 0 plus, and this is the feeling of transient, this one. So we will make the circuit at t is equals to 0 plus. For finding this value we are 2 plus, which we know that कि ये value जो है वो इतना ही आने वाला है, because यहाँ पर ये -8.6 है, but सर्किट को 2 प्लस पे बनाने का जो फीलिंग है वो अलग ही है। तो 2 प्लस पे जब सर्किट बनाएंगे तो 2 प्लस पे सर्किट, अब जो इंडक्टर है वो इस वोल्टेज, मतलब इसके जो इंडक्टर का जो करंट है यहाँ पर, नॉट दिस वोल्टेज एक्चुअली, सॉरी, जो इंडक्टर का जो करंट, राइट, 2 सेकेंड तक इंडक्टर का करंट कितना हुआ था, आई एल एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, इंडक्टर ने जो करंट एक्वायर किया था दैट इज यहाँ पर, दैट वाज दिस 8.65 एम्पियर्स। तो इसके करंट सोर्स से बेसिकली इंडक्टर रिप्लेस होगा, राइट। तो ये 8.65 एम्पियर्स करंट सोर्स से बेसिकली वी विल रिप्लेस। तो जो सर्किट है t is equal to 2 second plus, which will be this resistor, which is 1 this inductor will replace by this 8.65 amperes current, and we have removed this supply because after 2 seconds the circuit is discharging motor. So this is the circuit at t is equals to 2 plus, right, this is the circuit. And now this voltage across this inductor is VL 2 plus, which will be simply माइनस ऑफ 8.65, राइट, बिकॉज इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है बेसिकली ये 8.65 है, राइट, 8.65 वोल्ट, और जो ये है इसका अपोजिट है, राइट। सो वी एल टू प्लस इज माइनस ऑफ 8.65 वोल्ट्स, माइनस ऑफ 8.65 वोल्ट। सो इसके अकॉर्डिंग जो ट्रांजिएंट इक्वेशन होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो ट्रांजिएंट इक्वेशन होगा दैट इज वी एल ऑफ टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 8.65 माइनस ऑफ टी माइनस 2 divided by 1, right? So at last it is following this equation. So once again I am making this waveform for the inductor voltage more clearly here. Right. So this is the inductor voltage. First it is having a initial value, this is the 10 volts, right, which is the VL 0 plus. उसके बाद it is discharged up to this 1.35 volts, यहाँ तक ले लेते हैं, so that discharge up to this value, it is 1.35 volts up to the time instant, that is 2 seconds, right. So this is the time instant which is t is equals to 2 seconds, and then at this time instant there is a discontinuity and this voltage waveform, and it has jumped up to minus of 8.65 volts, right. So this has jumped up to minus of 8.65 volts, and after that it will simply terminate up to 0. So perfect. So now this is the finite, which is 0 volt, which is a fixed value, we know that, right. And here it is following the equation. Let's change the color. Tan e raised to power minus of t, and okay, minus of 8.65 and e raised to power minus of t minus of t. Okay, and this is the discontinuity which we should not. So this is the discontinuous waveform of the third voltage, and यहाँ पर also this is the first discontinuity is this, right. So there are two discontinuities in this voltage waveform of the inductor, as you can see, because ये value जो है this is VL 0 minus, it is a fixed value which is 0 volt. So this is the waveform for the inductor voltage. So I hope it is clear, and if you have any queries you can definitely ask in the comment section, and also suggest me to improve wherever I require in the comment box. So okay, thank you.